वज़ीर आईटी और सनत KT रामाराव ने HICC में मुनक़िदा 3D प्रिंटिंग मेडिकल डिवाइसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना में तिब्बी शोबे को फरोग देने की वजह से कोरोना वबा के दौरान वेंटिलेटर्स का मसला रियासत में दरपेश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में T हब, V हब, टास्क इमेज सेंटर, तेलंगाना नॉलेज एंड गेमिंग मल्टीमीडिया के बशमूल 1500 कंपनियां कायम हैं, जिसमें सैकड़ों लोग बरसरे खिदमत हैं। Conducting faculty development programs to train the trainers, networking with AM ecosystem and industry interface. Shri Venkat Janardhanan. May I now request Shri Rajashekhar Upputuri, co-founder and chief executive officer, Think 3D, to please come on to the dais. Shri Rajashekhara Upputuri. May I now request Dr. U. Chandrasekhar, Program Director, Wipro 3D, to please come on to the dais. Joint R&D initiatives, new AM applications and components development. Collaborative opportunities with the National Center for Additive Manufacturing opening up in Hyderabad. As we all know, healthcare is something that is now, I think, the first topic in any conversation of late. So therefore, I think this could not have happened at a more opportune time. This event and the center are a continuation to the state's efforts in being the startup state and building an ecosystem for innovation by our startups, industry and academia. While the National Center for Additive Manufacturing is a new addition, Telangana state is already home to a robust innovation ecosystem consisting of the T Hub,